spaces. Yes, thank you. So these are the reasons why it is not just about one type of a workplace. We are talking about NGOs and the development sector broadly today, but a variety of spaces can be SISA, whether it's a school or a hospital, even our families. So as entry points into this conversation on SISA, we chose to use the lenses of gender, sexuality, well-being, and rights, because these are contexts that we are familiar with given our work. We do acknowledge that there are many other lenses that could contribute to making a space SISA. So to kind of focus our conversation this TARSHI, we picked 4 thematic areas. LGBTQIA plus rights, we used 4 thematic areas: LGBTQIA plus rights, and disability, psychosocial well-being, and anti-discrimination. So we were curious about where we stand on these themes in the NGO and development sector. So at TARSHI, our work has all kind of always incorporated the essence of SISA, because we focus on shaping attitudes and environments to make them more affirming and inclusive and safe. So whether it's a training that we're doing on sexuality education, or it's our yellow and red book and blue book that we have for kids on sexuality education, all of these are about, or even our work on stress management and burnout prevention, especially for people who do activism and human rights work. So we've always kind of, brought in this lens of SISA. But SISA is one, it is bigger than our work. It is also dynamic and it's a work in progress. So it's not like a checklist where you can be like, yeah, I have done these 5 or 6 things and, my workplace is SISA. We are all at the same time experienced, because these are conversations we have when we are just human beings in a workplace. And at the same time, we're all learners. So we wanted to explore 2 things. What have been the experiences and outcomes of NGOs and collectives in their efforts to be SISA? And second, what can support the creation of safe spaces that accept and allow for diversity of expression of diversity in work and in life? So I'm going to pause here because we want to share a question before we continue. And I'm going to ask our tech folks to help us ask this question. Nandini, you are muted, I think. So you could click the link in chat to answer the question, or you could go to menti.com and enter this code and add your inputs.
Hope you have no issues accessing the Mentimeter or the link to the Google document. And this is great. We're getting to see, we're hearing about policies, we're talking about attributes such as consent, visibility, and respect, about being non-judgmental, role clarity. So the responses that we get range from attributes or ways of being such as non-judgmental and curiosity to learn and confidentiality to more what do I say, like hardcore things like role clarity and knowing what your job is about. Mental health is coming up quite a bit. We hear a lot about check-ins as part of regular meetings. Great. We hope to add on a little bit more and hear from many of you. We have over 60 people who've joined, so we hope all of you are able to add your thoughts. A big one is that diversity of identities is encouraged and celebrated. Disability accommodation and people being respectful of gender presentation and forms of expression of gender, culture, religion, and so on. Nuanced conflict management. Thank you. We want to come back to this later, but for now we would like to move on. Nandini, can I share screen? Thank you. All good? Okay. Okay. So our work with this event, what we really wanted to do was to showcase two things. One is some of the work that we've been doing already. Most importantly, a series of conversations in the form of interviews and surveys that we did in 2021. And so we did interviews with 21 individuals who spanned 15 organizations, and 25 people responded to a survey. And we thank the organizations that we've mentioned here for their time and their honest sharing, because that has sort of fed into a lot of what we've shared today. So what we are going to share today, and the second part of this, sorry, just a second. Yeah, I'm still on the right slide. So we now want to share some ideas, some experiences and examples that came up from these interviews and surveys, which we've compiled into a report. The conversation can range from fundamentals to deep nuances, and it's not possible for us to explore this range in this webinar, but we'll also be sharing links to the report where you will be able to do a deeper dive into some of the topics that I'll probably just touch upon today. And once we're done with this, we're going to have an exciting conversation with Deepa Pawar and Vandita Morarka, and we'll leave that to them to take on. So just a quick jump into the results of our report. So there are a few takeaways from this report, but in the interest of time, I wanted to focus on just a few of them here. The first is about aligning with and going beyond the law. So of course, there are certain laws that are required that organizations are meant to follow, whether it is about leave, parental leave, or it is about prevention and protection of women from sexual harassment at the workplace. But many organizations choose to go
beyond what is just required in terms of law. So, for example, during COVID, many organizations instituted bereavement leave, COVID leave that was, over and beyond what they already got in terms of a leave mandate. Several organizations, including us at TARSHI, have POSH policies, which are gender neutral. So the policy, the law mandates that it only covers women, but many organizations have policies that are gender neutral. And when it comes to even things like medical insurance, several organizations told us that they have tried to offer a cover to people in relationships that are not technically recognized by the state yet. So, in terms of adding them as dependents or like, offering premium for components that are still not legally available. So the second that really came up was around creating cultures of care, safety, and solidarity. So COVID-19 really, spiked the conversation on mental health, right? And given that we did our interviews around that time, a lot of things came up on how do we build and foster like a spirit of connection within the team when we are remote. And that's kind of carried on even since COVID. So some of the things that came up were like, all staff having lunch together. That was, something that was really considered a big way of creating care, solidarity, and a culture within the organization. Regular team check-ins, staff retreats, holding separate budgets for learning and development of staff members, and most importantly, self-care and collective care practices, which at that point was still kind of being experimented in different ways, and which we are sure now have, kind of been solidified in organizational activities. Another thing that came up, a third point that I want to talk about here is some interesting engagement on the roles and restrictions of policy. So for some people, they shared that would a policy kind of create a framework that restricts conversation to just the policy? So what then do we do about, instances about things that fall beyond the policy itself? And some people said, yes, which is why policy is just a framework, like finally practice is what kind of guides the whole thing. So that was, an interesting aspect that came up. We want to add a little bit about theme-specific reflections. We cannot go into too much detail, but there were some really interesting examples, questions, and experiences that came up that we want to go through here. So I'll start off with LGBTQIA+ rights. A big part of creating SISA spaces is about bringing grassroots and lived experiences to the organization, right? So what does it mean to create an environment in the office that is supportive and sensitive to people of all identities? So some examples that organizations mentioned are washrooms that are gender inclusive. That's a message I got from a participant who suggested that gender inclusive is a broader term. Thank you. We'll chat about that. So washrooms that are not segregated by gender, not having dress codes, which allows for various forms of gender expression, which aligns with one's gender identity. Some organizations talked about forming a kind of informal support group within the team itself. So if someone, for instance, felt unsafe because of their gender identity and how it is sort of seen in public, there was a kind of subtle support that they got from team members to ensure their safety. So as you can see, not all of these are, rigid policies, but they are practices that, foster a sense of that take up our lived experiences and guide our organization culture. Another thing that came up in this regard, especially important when DEI conversations are getting mainstream attention, is that we need to have sensitization, but with sensitivity. So who are the people who are expected to do the sensitization?
How are we thinking about the impact it may have to ask some people in the team based on their identities to keep revisiting experiences and constantly having to tell and retell their stories. So while it is sensitization, how can we approach this with sensitivity? So even though the intention is, it is well intentioned, we need to be appreciative of these nuances. When it comes to disability, of course, the primary point is that disabilities are extremely diverse. So each type of disability has a different history of marginalization. So which means it will also require different kinds of support. So accessibility and ensuring that our organization is accessible will depend significantly on recognizing that disabilities are diverse. So there are also politics around disclosure that we need to be mindful of. Does everyone feel safe disclosing their disability in the workplace? What about people with invisible disabilities? How confident or comfortable do they feel asking, if I'm a person with an invisible disability, is my office environment okay? Do I feel okay going up to someone and saying, I need XYZ forms of support to be able to do my work? And of course, disability also intersects with so many other aspects of our identities, from our gender identity to our psychosocial well-being at that point. So there's some aspects around disclosing disability that also need to be kept in mind in this case. Finally, when it comes to reasonable accommodation and accountability. So when somebody with a disability qualifies for a job and they require certain forms of support, how is the organization able to discuss and meet those forms of support in a way that enables the person to do their job effectively, and while also maintaining accountability to key stakeholders? So navigating this balance has been I wouldn't call it a challenge, but the need to navigate this did come up in several interviews as well. So when it comes to psychosocial well-being, essentially about managing stress and preventing burnout, a big aspect that organizations have yet to fully sort of wrap their head around is that we all have mental health aspects that we bring to the workplace. So how can policy and practice kind of support this? So when it comes to the diversity in how we deal or how we manage our mental health, there were quite a few interesting examples that came up. So some organizations said that they practice the use of content warnings when they are discussing certain topics or they're putting out certain forms of content. So it is, a caution to tread gently, saying, okay, this is the topic being discussed. So just be mindful that, if it is something that's going to be, evoke certain feelings in you. Another organization, or actually several, talked about how pets are being accepted as part of chosen families, to expand our idea of family, to move beyond, people related by blood or by relationships such as marriage, which are socially sanctioned. So to expand what we mean by family and perhaps even allow for pets to be in the workplace. So these are some, the point is, I guess, not to list the various ways in which this can happen, but an idea that a recognition that mental health unfolds in such diversity among individuals. When it comes to anti-discrimination are, one of the pillars. The most important thing is intersectionality, sort of, understanding that we're not monolithic identities. We're not just people projecting a singular all the time. So we bring in our class, our caste, our gender identity, and all of these intersect with various other societal factors, including our 4 different themes, to bring a mixture of a person to the workplace. So when we deal with such different individuals, what does it mean to do things like performance evaluation?
Are we recognizing that our access to education or how we have gone through education is affected by all of these? And therefore, our understandings of what makes a professional workplace, what is productivity, each of these are sort of affected by these multiple categories. So related to that is the aspect of deconstructing familiar office culture. You know, a lot of people talk about how NGOs are increasingly becoming corporate-ish. So we are apparently borrowing ideas of how NGO workplaces should be kind of from corporate workplaces. So given that, who is identifying what should be the office culture? Is it top down? How is everybody contributing? What is considered professional behavior? So, and how are we giving the scope to question or challenge hierarchy within the organization? So one organization talked about how for them hierarchies are treated in a fluid way. So rather than treating it as static, it is based on a project or a particular task. So another thing which also came up in the Mentimeter that we just did is how are conflicts managed? Do we give scope for constructive conflict to happen in our workplaces? So this is a very, very quick view of what came up in the interviews and the surveys. And we really, really encourage you to read the report and the infographic, the links of which we'll be sharing shortly. So yes, that's been a lot of chatting. So if anyone would like to just take a moment to stretch, have a sip of water, we welcome you to do that now. We have a minute or so to just do that, like move our eyes from the screen. শুরু হয়ে গেছে, অনেকক্ষণই শুরু হয়ে গেছে। ডিসেম্বরের এখনো অনেক দেরি। All right, welcome back. So as we go on to the next section, we want to end with one point about intersectionality and sort of emerging fronts. You know, a lot of organizations that have certain areas on which they focus, it is quite likely that, you know, they have put in a lot of thought on policies and practices in that particular area, and which means other aspects of identities and aspects that we bring to a workplace may not get as much attention. So just keeping in mind the aspect of intersectionality, realizing that, for instance, a person with disability also brings in their gender identity, their caste, their the language that they speak, and all of these are also elements that they bring into the workplace. This is going to be very important as we think of how we can make our workplaces safer and inclusive and affirming. So one thing that really came out across the board in all our interviews was that SISA spaces must include space for self-reflection and critical thinking. And policy is not the beginning or the end, but it is a guide to practice. And at the same time, policy also evolves with practice. So on that note, we want to kind of switch gears and invite our wonderful speakers. We have Deepa and Vandita. Deepa is from Anubhuti and Vandita is from One Future Collective. And we're just going to get them started on a conversation on some of the things that we've been talking about here, and some questions that we did receive when you registered for this webinar.
So we want to start off from there. In the chat, we will share uh, the bios of people who of the speakers. So because we want you to take a bit of time to read it, but over to Deepa and Vandita from here. Thank you, Hi Vandita. Deepa, hi Vandita. Yes. So, okay, to begin with, any thoughts from what we've heard in terms of what's come up in the interviews and surveys that we just talked about? Thanks. Maybe I can go, and then Deepa, if you want to join in. I was like taking a second to locate Deepa, and now I found them. So good to be here, especially with Deepa, whose work I really, really respect and learn from. Not only professionally, but I think it's also provided me a lot of personal guidance. So thank you for that. I think in terms of the report, I think it's an incredible report, and it's been really useful for me as a moment to reflect on what One Future Collective has been doing and what is our role in the sector, not just for the work we do, but in terms of how we shape what organizations in this space look like, right? And I think things like the report provide like a concrete evidence for something that each of us have been feeling. There's a reason so many of us are here today. So I do align with a lot of the reflections in the report. I think there is a lot of scope for us to take this back to our work, to situate it in our context, and to understand now how can we use this, what parts may be relevant, what parts may not be relevant. I sometimes also see a tendency, including for us, to say these 5 things in the report don't apply to us, so maybe we don't take the report at all, right? But to me, the beauty of something like this is to say something works. And some of it may not be true for us now, maybe it will be in the future. But to be able to make that distinction and to still use this and to use it as a reflection and action point, because I also feel like, at least as nonprofits, I find we reflect a lot and we reflect well. But then reflection isn't the end of work, right? Thinking about something is not the same thing as doing it. And it's equally important that there is space for thinking, but then also that there is space for action. Action requires resources, commitment, intent, a lot of things. So you may not be able to do it today, but I have really benefited from being honest with my team and saying, हमारे पास पैसे नहीं है. Like to do this year, we don't have the money, but let's make this a budgetary goal for 3 years, right? So just want to say that, and I will stop here. But Deepa, please come in. यस, तो सबको जय भीम, जोहार और जिंदाबाद। एक्चुअली आज जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं वो सबके जहन में है, हम लगातार कंटिन्यूस उसके ऊपर बात करते हैं। मुझे लगता है कि सीसा तारशी जो इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, जो भी चर्चाओं को जन्म दे रहे हैं, उसके अंदर से बेटर क्या बनेगा, उससे ज्यादा जरूरी है कि अलग अलग थॉट्स जो डाइवर्सिटी से आते हैं, इंक्लूजन से आते हैं, उनके थॉट कंट्रीब्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लगातार इन चर्चाओं का एक करंट, एक जिसे हम कहें कंटिन्यूएशन रखना, एक जिसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो हम डिस्कस करते ही है, लेकिन अगर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं या हम रेगुलर जब इसको डिस्कस करते हैं, तो एक तरह का काफी पॉजिटिव दबाव मैं कहूंगी कि हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर रहता है कि इसके बारे में सोचना है। एक्चुअली वानी, जब तुम बोल रही थी, तुमने इतना सारा कवर कर लिया है रिपोर्ट का, तो आधा कंटेंट तो वहीं पे मतलब हमारे पास बोलने के लिए कम है। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि किसी भी एनजीओ में मतलब मेरे पास कुछ सिंपल डेटा है कि करीबन 3 मिलियन एनजीओ हर रोज रीच करते हैं 200 मिलियन बच्चों को, यूथ को, औरतों को। तो बहुत बड़ा हमारा एक टास्क फोर्स है, एक तरह का, जो हम बहुत ग्राउंड में जाके अलग अलग इंटरसेक्शंस के साथ काम कर रहे हैं। और वानी, मुझे प्लीज रुका देना, टाइम कीपिंग आप कर लेना। तो यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी तो विजन को लेकर स्टार्ट हुआ है, कोई सपना देखा है, उन्होंने कोई ड्रीम बनाया है, राइट, कोई ड्रीम मन में आया। और कई ऑर्गेनाइजेशन के जो ड्रीम है वो वॉयलेंस के अगेंस्ट है, वो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है, गैर बराबरी के अगेंस्ट है। कुछ तो दुनिया में ऐसे कुछ हो रहा था जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और उसके अगेंस्ट आके हमने हमारे स्टैंड लिए, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो यहाँ पे एक कंट्रीब्यूट करना मुझे बहुत जरूरी लगता है
कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब हम एंटी डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं या एक इक्वल इक्विटी भरे स्पेसेस की बात करते हैं, तब विजन शेयरिंग तो हम जरूर करते हैं। बार बार बातों में आता है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है या हमें ये अचीव करना है, इसलिए शुरू हुआ था। लेकिन विजन तब तक एक हेल्दी नरेशन में या हेल्दी प्रोसेस में उस तरह से आपको सामने पिक्चराइज होते हुए नहीं देखेगा जब तक विजन प्लस लीडरशिप होगी। तो जब विजन शेयरिंग हम करेंगे तब बहुत मायने रखता है कि लीडरशिप शेयरिंग की प्रोसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो कितनी हेल्दी है, वो कितनी सहज है, सादगी भरी है, आरामदेह है। मतलब मैं कुछ शब्द काफी लोकल इसमें यूज कर रही हूँ क्योंकि लीडरशिप भी कभी कभी बहुत बर्डन लगने लगता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का शायद मुझे लगता है कि एक तरह का ये कमिटमेंट हो सकता है या प्रायोरिटाइज हो सकता है कि लीडर शेयरिंग के प्रोसेसेस हम किस तरह और इंक्लूसिव करें। दूसरा वहां से एक मुझे हमेशा लगता है जो खासकर ब्राह्मणी पेट्रियार्की से आता है कि नॉलेज ऑक्यूपाई करना, नॉलेज बंद मुट्ठियों में रखना, बाकी सारा शेयरिंग कर लेना लेकिन बहुत बंद मुट्ठियों में नॉलेज रखना। हम अनुभूति में बहुत कोशिश करते हैं कि नॉलेज शेयरिंग ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। आप जितना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन से बनता हुआ, जुड़ता हुआ, जन्म लेता हुआ नॉलेज अगर शेयर करते हो, वो कुछ ही हिस्सों में नहीं रहेगा, वो कुछ ही हाथों में नहीं रहेगा, वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस के साथ, एक नैसर्गिक प्रोसेस के साथ जब ऑर्गेनाइजेशन में झलकेगा तो अपने आप लोग उस नॉलेज का हिस्सा बनने लगेंगे, वो नॉलेज के कंट्रीब्यूटर बनेंगे। तो ये दो बातें मुझे अभी जो है वो दिमाग में आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन के कई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि हम जो काम करना चाहते हैं वो टीम उसके अंदर इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है, लीडरशिप नहीं ले पा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजन शेयरिंग तब तक आर्टिफिशियल होगा जब तक वो लीडरशिप रिलेटेड मायनों में और ज्यादा अपना करेज बिल्ड करे। यस। Thank you, Deepa. And Vandita, I think talking about knowledge and the Bandh Muthi is a fantastic, you know, metaphor. And मैं सोच रही हूँ कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो या पॉलिसी हो या प्रैक्टिस हो, और जैसे आप बता रहे हैं नॉलेज को कैसे हम शेयर करें, उसमें कॉन्वर्जेशंस करना, it is such an important part of how an organization makes all of these work. पॉलिसी हो या प्रैक्टिस हो, कल्चर हो या नॉलेज शेयरिंग हो या लीडरशिप बिल्डिंग भी करना। तो आपके एक्सपीरियंसेस में कॉन्वर्जेशंस कैसे हो सकते हैं? what has worked for you to sort of democratize these conversations, ताकि ये सिर्फ एक तरफा नहीं जाता है, लेकिन सभी लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जो भी लेवल में हैं, जो भी एजुकेशन लेवल या क्वालिफिकेशन जो भी है, वो कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? वानी, क्या तुम मुझसे पूछ रही हो? तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो जहां तक अनुभूति की बात करें, हम भी काफी सीख रहे हैं। बहुत कम उम्र के हैं हम, 7 से 8 साल हुए हैं हमें एज ऑर्गेनाइजेशन काम करते हुए। मुझे 2-3 चीजें बहुत सामने आई कि एनजीओ ने थोड़ा टिपिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें बहुत ज्यादा तैयार किया है सक्सेस बोलने के लिए। सक्सेस हुआ है क्या, रीच किया है क्या, और धीरे धीरे ऐसे हुआ कि शायद पता नहीं हम फेलियर से क्यों डरने लगे। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शुरुआती हुआ था एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से कि हमें कुछ तो करना है, देखते साथ साथ में साथ आके ये वर्क करता है कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब हम एक स्ट्रक्चर में, ओवर स्ट्रक्चर में जब बन जाते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल जो अप्रोच हमारा स्टार्टिंग में था वो धीरे धीरे उसकी धार कम होती जाती है, उसका शार्पनेस कम हो जाता है। तो एज अनुभूति हम बस कोशिश करते हैं कि हमारे फेलियर के केस स्टडीज हम बहुत डिस्कस करते हैं, और कई बार वो फेलियर के केस स्टडीज के अंदर हमें बहुत लर्निंग मिलती है कि प्रोसेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना था, कम्युनिकेशन किस तरह से कर सकते थे। और कई बार कारण ये भी निकल के आता है कि बेसिक ऑकवर्डनेस, मतलब मैं बहुत ही बहुत जिसे क्या हार्ड लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहती हूँ, बेसिक ऑकवर्डनेस कि ये कैसे बोलते हैं,
ये बोलते तो क्या लगता, ये बोलना रिसीव होता कि नहीं होता, मेरे पास ये आता है नहीं आता है, इसके बारे में क्या लगता। तो इसके हम काफी फीडबैक लेते हैं कि ये जो एक बेसिक ऑकवर्डनेस है जो कम्युनिकेशन में होता है, उसके कारण प्रोसेस जो है वो इम्पैक्ट होते हैं। तो ये बेसिक ऑकवर्डनेस को हम 2-3 नजरिए से चैलेंज कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रखना, फेलियर को एक्सेप्ट ना करना, मुझे लगता है फेलियर को प्रायोरिटाइज करना कि जहाँ पे काम हम कर रहे हैं वहां पे फेलियर होंगे, ठीक है। अनुभूति की अगर बात आप करें तो अनुभूति बहुत बड़े नंबर में हमारे पास 98% नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब, दलित कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी, काम करने वाली लीडरशिप भी यही है। मेरे जैसे लोग जो सीनियर पोजीशन पे है, मैं खुद नोमैडिक ट्राइब से हूँ, और जिन लोगों के साथ करते हैं वो भी मार्जिनलाइज है। लेकिन बिटवीन हमारे अंदर भी हायरार्की है, भले हम आइडेंटिटी वाइज एक जैसा क्यों ना रिप्रेजेंट करें, लेकिन हमारे अंदर भी हायरार्की है। तो एक चैलेंज वानी हमें काफी गया कि जब एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश एनजीओ कल्चर में जब आपको लोगों को हायर करना होता है, तो एनजीओ आपको बोला है कि एक तरह के लोगों को आपको हायर करना है, और हमने उसको चुनौती देते हुए ये सीखा कि बहुत कम मायने में लोगों के एक्सपीरियंस को स्किल सेट करके देखा जाता है। राइट, आपने अमुक एक इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, तमुक एक यहाँ से कोर्स किया है, अमुक एक किया है, लेकिन जो लोग अपना अनुभव लेके आया है, जेंडर माइनॉरिटीज हो, दलित हो, आदिवासीज हो, एनटी-डीएनटी हो, अनुभूति का जो गठन ही हुआ है वो मेरे अनुभवों से हुआ है। तो मुझे लगता है कि अनुभवों को, एक्सपीरियंस को बस वर्नेबिलिटी करके क्लेम करने से बेटर है हम उसको स्ट्रेंथ के मायने में भी देखें, उसको स्किल सेट के मायने में देखें। और जब वो शुरुआत हमने की, हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है नजर आने लगे कि लोग बहुत कुछ अपने साथ लेके आते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद दरवाजे के बाहर छोड़ के आने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ना लगाए, वो साथ में लेकर आने के लिए क्या हम वो दरवाजे ओपन कर सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस, मतलब सिंपल बात बोल के मैं रुकूंगी कि लोग सीवी में बहुत प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डालते हैं। हम लोगों को बोलते हैं कि आपने अगर किसी गारमेंट में काम किया है, आपने इवन बेगिंग का काम अगर किया है, तो वो भी आपका एक्सपीरियंस है, और वो आपकी जर्नी को स्ट्रेंथ देता है, कमजोर नहीं बनाता है। तो हमने हमारे नरेटिव चेंज करना शुरू किए, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें भी ट्रेनिंग दिया गया है कि किस तरह से उसके ऊपर काम करेंगे। तो मुझे लगता है वो अगर एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो यस, कॉन्फ्लिक्ट होने ही वाले हैं, वो क्या बचेंगे नहीं, लेकिन कम से कम लोगों को ये सहूलियत मिलेगी कि एक लेवल ऑफ हम यहाँ पे शेयर कर। Should I come in, Vani? Thank you. No, Deepa, thank you so much for sharing that. I think that's been the biggest struggle for me. जो आपने बोला कि एक एनजीओ कल्चर है ना, आई थिंक हमारे में ये इतना स्ट्रगल हुआ है बिकॉज दो साइड से स्ट्रगल होता है कि एक साइड से ये स्ट्रगल है कि अगर आपको वो एनजीओ कल्चर फिटिंग लोग ना मिले, पैसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दूसरे साइड से बिकॉज दे माइट से कि हमें लिव्ड एक्सपीरियंस लीडरशिप में चाहिए, बट उन्हें चाहिए आईवी लीग की डिग्री सीएक्सओ में, एंड वो उसी के पीछे पैसे देते हैं। आप ट्रैक कर लो किसको फेलोशिप मिल रहा है, किसको अवार्ड्स मिल रहे हैं, दे ऑल कम फ्रॉम, आई कैन नेम 5 कॉलेजेस इंडिया के और अब्रॉड के, और वो वहां से आ रहे हैं। So I think that becomes one challenge. Second, a challenge that I have seen is a complete lack of self-confidence and self-esteem in people. And वो उनकी गलती नहीं है ना, उनको systems ने वहां तक ले गया है कि उनको अपनी abilities में कोई confidence ही नहीं रहा है। And I see this in current past, like जो भी हमारी teams में रहे हैं, उससे क्या हो जाता है कि हमें ये लगने लगता है कि ये काम हमारी ऊपर का काम, कि ये काम हम नहीं कर सकते, इस हायरार्की लेवल पे हम यही काम कर सकते हैं। एंड आई रिमेम्बर कि हमारे टीम में जैसे, एंड इनफैक्ट दिस हैज बीन अ लर्निंग फॉर मी बिकॉज हम बहुत ही ज्यादा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन थे व्हेन वी स्टार्टेड। मेरा कभी इंटेंट भी नहीं था टू बिकम अ फॉर्मल एनजीओ। आई बी ऑनेस्ट, द रीजन हमने फॉर्मलाइज किया इज बिकॉज हमारी सब थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, एंड एक पॉइंट के बाद टू कीप डूइंग दिस मनी, टू कीप डूइंग दिस वर्क विदाउट मनी जस्ट बिकेम इम्पॉसिबल, क्योंकि हम एक एक्चुअल जॉब करते थे, हमारी डे जॉब, और फिर ये करते थे, राइट। पैशन बहुत था, बट पैसे नहीं थे, एंड इट जस्ट यू गेट ओल्डर, यू बर्न आउट, नहीं हो रहा है काम, मी एंड अ लॉट ऑफ टीम मेंबर्स आर डिसेबल्ड, तो इट जस्ट आफ्टर अ पॉइंट इट बिकेम इम्पॉसिबल, and that led to formalization of the structure. Formalization of structure was not the intent, because the idea is कि ये काम तो कैसे भी हो सकता है, एनजीओ स्ट्रक्चर के वजह से ये काम नहीं हो रहा है,
काम लोगों की वजह से हो रहा है. So now in that process, what has happened is हम लोग अगर कोई strategy meeting भी कर रहे हैं, जो भी like हमें पता भी नहीं था वो like what is a strategy meeting, and we have like new staff members in it, they are terrified of having an opinion. They are उनको like I have had someone ask me at the end of day one कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? Like why are we a part of this? Like why is this paid work where I can just sit? And I'm also okay with the fact कि आप बैठो और सुनो. बिकॉज मुझे किसी ने किसी कमरे में बैठ के सुनने दिया, इसके लिए मैं सीख सकी, राइट? एंड इसके लिए आज मैं कुछ कर पा रही हूँ एंड मैं बोल पा रही हूँ ये ऐसे करते हैं या ये ऐसे करते हैं. सो आई थिंक दीज आर टू थिंग्स दैट आई हैव personally struggled with, and I have seen my team and then the larger like non-profit space really struggle with. I think the other thing is, and ये मेरा opinion है and शायद everyone will not agree with this, I don't think non-profits equal movements. Non-profits are a part of movement building. एक term भी है non-profit industrial complex, शायद लोग जानते होंगे. I think over time हम अपने आप को as in not individuals but organizations को alive रखने के लिए बहुत ऐसी चीजें कर रहे हैं as a sector which are unnecessary. Our goal should be कि हम exist करना बंद करें ना, but that's just not happening. And that's why I want to make this distinction that movement work is different from non-profit work. In some cases that aligns. I'm very lucky to have team members who bring movement mentality to the non-profit, right? तो वो हमें भी ज़्यादा accountable रखते हैं. They are also representative of what Deepa said, right? They come with very grounded, lived experience realities. And that is why they're able to remind us कि एक point के बाद ये sheet एक sheet है. Like the reality is different. Like there is something else we need. But the reason I bring this out is sometimes it's okay for people to say, this is how much I want to do. And this is my job और मुझे इतना ही करना है. And I think that's also a part of a space, following that SISA or that sort of mandate is ये job है. For a lot of us, and I think sometimes non-profits also take advantage of this. I have seen it happen, right? With things like आप अपनी story share करो. मैं fundraising नहीं कर पाती without sharing that I'm a survivor of sexual violence. Till I don't tell people this, they are not willing to give money. And that's a terrible position to be in. मुझे नहीं बार बार बोलना आपको. उसके बाद, like आपके साथ ये बात share करने के बाद, शाम को I have to deal with the consequences of having shared this with you, right? So there have to be boundaries as to what you are forced to share. What are some things जो आप चाहकर भी नहीं छुपा पाओ? छुपाने की बात नहीं है, but आप नहीं भी share करना पाओ तो it comes across. Like if I'm disabled, and if it's a visible disability, you're going to see me and know. But I'm not obligated to tell you kya hua, kaise hua, and evoke your sympathy. So I think that's the boundary of that. And then there's the boundary of, I'm a program manager, for example. मुझे नहीं काम करना जो lead का काम है. आप मुझे उतने पैसे नहीं दे रहे हो कि lead का काम करूं. And I know that this is perhaps where the corporatization is also happening. But I think that distinction is important. Anyone listening in, I encourage you कि अगर आप movements का हिस्सा हो, give it everything. And show up at your jobs, but they are jobs. And you have to make that boundary. So I know it's a bit against maybe a lot of the beliefs in the room, but I just wanted to say this. Yeah, I will stop here. Deepa, anything to share in response? दो बातें जब ये चर्चा चल रही है, मैंने एक्चुअली जब मेरे बातों की शुरुआत की मैंने जय भीम बोला, राइट? ये जय भीम बोलने के लिए बहुत ताकत करनी पड़ी है. पूरे 22 साल में इस सेक्टर में हूँ और मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब मैं खुद नोमैडिक डू नोटिफाइड ट्राइब से आती हूँ, लेकिन मैं दलित एक्टिविस्ट हूँ, मैं बाबा साहेब को मानती हूँ और इस तरह के पूरे सत्यशोधक मूवमेंट की मैं बहुत स्ट्रांगली फॉलोवर हूँ. लेकिन कई बार मैंने वो एक लिमिटेशन महसूस किया एनजीओ में, जहाँ पे आप आपका दलित एक्टिविज्म एक्सप्रेशन लिमिटेड करते हो. अगर आप उस विषय के ऊपर बोलते हो तो थोड़ा सा डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा रेडिकल, काफी रेडिकल हो, हमेशा जात के आधार पर बोलते हो, इस तरह से भी होता है. मुझे लगता है कि अभी एनजीओ सर्कल को बहुत ज्यादा रिविजिट और रिफ्रेमिंग करने की अपॉर्चुनिटीज है कि हम क्यों ना देखें कि अगर हम एनजीओ की भी बात करें, मैं ओवरऑल सारी बात कर रही हूँ बियॉन्ड अनुभूति जाके, कि एनजीओ की पिलर्स जिनके ऊपर एनजीओ खड़े हैं, इवन मैं कहूंगी मूवमेंट्स भी खड़े हैं,
कई तरह के जो है अभियान भी खड़े हैं। उसके पिलर्स में पिरामिड का एक स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा। फ्रंट लाइन में बहुत बड़े मात्रा में आदिवासी, दलित, एनटी सिंगल विमेन, ये सारे आइडेंटिटीज आपको नजर आएगी। तो अभी एक बहुत अच्छा मौका है कि क्यों ना हम हमारे थॉट को फिर से सोचे कि इनके इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन के बारे में क्या। इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन की जगह किस तरह से होगी, लोग आराम से अपने बारे में बात करें, वो किस तरह से होगा। हम अनुभूति में देखते हैं कि हमारा बहुत बड़ा जो टीम है वो दलित, एनटी बैकग्राउंड से आता है। और वो कहता है कई बार कि जिस तरह से हम खुल के यहाँ पे बता पाते हैं कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी तकलीफें क्या है, हमारे डिग्निटी के मुद्दे क्या है, वो हम इवन हमारे कम्युनिटी में भी नहीं कर पाते हैं। वहां पे एक एक दो चीज मैं हमेशा अभी एडवोकेट करने लगी हूँ कि हम रिप्रेजेंटेशन को तो मानते हैं कि एनटी होने चाहिए, आदिवासी होने चाहिए, दलित होने चाहिए। व्हाट अबाउट मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन? कि 10 के इसमें अगर एक एंटी दीपा बैठेगी, वो अपने आप को अकेला महसूस करेगी। कल्चरल शॉक है। मतलब मैं वंदिता जैसे बोल रही है, मेरा तो बचपन ही टेंट कम्युनिटी में गुजरा है। मैं 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टेंट में रही हूँ। और जब मेरा एनजीओ में आना जाना हुआ, बहुत कम उम्र में मेरा एनजीओ के साथ संबंध आया, ऐसे लगता था कि हम बुद्धि तो हमारे पास बहुत है, लेकिन कल्चरली हम बहुत डिफरेंट, अलग अलग रास्तों पे है। हम जब चल रहे हैं तो हमारे साथ इन एनजीओ लोगों को पैर थोड़े कम जल रहे हैं और हमारे पैर थोड़े ज्यादा जल रहे हैं, क्योंकि शायद वो जलना जो है वो कैरी ऑन हो रहा है, हिस्टोरिकली, कल्चरली सदियों का है, अचानक नहीं है। तो मेरे जैसे लीडर जब सामने आते हैं, जो ग्रासरूट से है, टेंट कम्युनिटी से आते हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्रिमिनलाइजेशन का है, पुलिस के साथ जो है अनबन का है, किसी का भी ट्रस्ट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट अलग अलग लॉ लाती है जिससे भी हम थ्रेटन में जाते हैं। हम काफी रिच कल्चरली और भाषाओं से है। तो हम सब साथी सोच सकते हैं कि किस तरह के डायनामिक है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम कहीं भी कम नहीं है, लेकिन आप हमेशा कम हो, ये बताने की व्यवस्था बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम कर रही है। तो यहाँ पे एक मुझे लाइफ लॉन्ग महसूस हुआ है, खास करके जब अनुभूति की शुरुआत हुई। और मैं लिखती हूँ फाउंडर डायरेक्टर ऑफ अनुभूति। कई कॉन्फ्रेंस में शुरुआत में मुझे पूछा जाता था कि ओ, आपके मेंटर कौन है? कोई तो गुरु होंगे आपके जो आपको सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली गए महीने में मुझे किसी ने पूछा कि इतने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, टीम एक्सपांड हो रही है, लोकेशन एक्सपांड हो रहे हैं, किसी का तो हाथ सर के ऊपर होगा। देखने में ये सेंटेंस बहुत लाइट लग सकते हैं, लेकिन मुझे ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन लगता है, क्रिमिनलाइजेशन लगता है कि हम बुद्धिजीवी है, हम इंटेलेक्चुअल है, ये मानने के लिए आप तैयार ही नहीं हो। राइट? हम वर्नरेबल है, इसके आगे जाकर आप मानने को तैयार हो क्या कि हम प्रोफेशनल्स है, हम राइटर्स है, हम रिसर्चर्स है, राइट, हम इंटेलेक्चुअल्स है। और एक ताकत लगती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबका गरीब होना और हायरार्की में इंटेंसिटी ऑफ डेप्थ होना बहुत फर्क करता है। हम्म अगर हम नोमैडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब की बात ले, तो ये हिस्टोरिकल वायलेशन हुआ है हमारे साथ। तो हमारी लोग अगर 2 दिन के भूख का एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारे भूख का एक्सपीरियंस 2 महीने का है। इतना वो इंटेंसिटी ऑफ डेप्थ हाई है। लेकिन ये डेप्थ समझने के लिए लोगों को अपनी ताकतें बढ़ानी पड़ेगी। तो लास्ट वाली में यहाँ पे बोलूंगी कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम हमारे ऊपर किस तरह से वायलेंस होता है, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, हमें किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेसिबिलिटी चाहिए। ये हर कतार में एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, एनजीओज और फंडर, मुझे ही एजुकेट करना पड़ता है। इस ट्रिगर के बारे में आप क्या कहोगे? जैसे वंदिता ने स्टोरी के बारे में कहा, रेगुलर एजुकेट करना पड़ता है। लोगों को अभी तक पता नहीं है कि एंटीडीएनटीज क्या है, किस तरह के है, राइट? तो जहां से वॉयलेंस की शुरुआत हुई है, उन्हीं सेंटर्स में जाके हमें बताना पड़ता है कि आप जो है आपकी ताकतें बढ़ाओ, इक्विटी की तरफ देखो। हम करेंगे भी वो, लेकिन उसका स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। और उसके अंदर मुझे लगता है कि एक मेन स्ट्रीमिंग एस्टेब्लिश एनजीओ का और ज्यादा रोल है, जहाँ पे वो उस तरह के एग्जाम्पल्स, उस तरह के नरेटिव तैयार कर सकते हैं। मैं लास्ट बोलूंगी कि मैंने गए 10-11 सालों से ये शुरू किया कि हमारी स्टोरीज जो
वो किसी सब लोगों के स्टोरी की कोट्स नहीं है, हमारे स्टोरी हमारे है, राइट। हम किसी के केस स्टडीज नहीं है। और जब दीपा स्टोरी बोलती है तो दीपा को उस तरह से बनाया जाता है कि उसकी कहानी में हीरो हीरोइन कोई और होते हैं, और दीपा बस सूत्र संचालन करती है, वो बस एंकर होती है। आई डोंट नो आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। जैसे मैं बोलूंगी कि वंदिता ने मेरा लाइफ बनाया तब मैं बनी हूँ, वानी नहीं होती तो शायद जिंदगी ही नहीं होती। मुझे लगता है ये एक सेटल वायलेंस है कि लोगों के लीडरशिप के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए, उन्होंने जो अपनी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल किए हैं, उसके बाद जो वो खड़े हुए हैं, उनका क्रेडिट भी ले लेना। यहाँ पे मैं एंड करूंगी कि अनुभूति इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बहुत अवेयर है, कि लोगों के बुद्धिजीवी होने के जो प्रॉपर्टीज है, जो रेमेडीज है, वो उनके हैं, जो आदिवासियों से, एनटीडीएनटी से, दलित से बहुत सादगी के साथ हम ले लेते हैं, हमें समझ में भी नहीं आता। हम वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, कम्युनिकेशन में, रिप्रेजेंटेशन में इतने आसानी के साथ ले लेते हैं। एज ऑर्गेनाइजेशन और एज इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए सेकेंडरी है, लेकिन मैं एनटीडीएनटी को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कि लोगों के इंटेलेक्चुअल धरोहर की समझ एनजीओ सेक्टर को बढ़ानी होगी बहुत ज्यादा ताकत के साथ। यस। Vani, before we go to you, I just want to say one thing. Deepa, I very strongly agree with you, and I also feel like यहाँ पे I think और communities और organizations की एक responsibility है जो बिल्कुल नहीं ली गई है। आपने भी बोला कि mainstreaming बड़े organizations में जरूरी है ना, and the fact कि आपको बार बार जाके वो करना पड़ता है is a sign कि generally ये हो ही नहीं रहा है। एंड यू नो व्हेन ऑल, अगर सब 10 नॉन प्रॉफिट्स बोल रहे हैं हम इक्विटी जस्टिस पे काम कर रहे हैं, आप किसकी इक्विटी और किसकी जस्टिस पे काम कर रहे हो? सो आई थिंक आई जस्ट स्ट्रांगली रेजोनेट, सो आई वांटेड टू से दैट। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और एक और बात जो निकल के आ रहा है कि व्हाट डू वी कंसिडर नॉलेज, whose knowledge are we respecting, or what do we consider communication, or you know, the way things are to be talked about. So these are also fairly mainstream, which means, you know, they prioritize a certain gender, a certain set of castes, and certain, you know, essentially an able-bodied or a non-disabled perspective of so many things. So if I could zone in a little bit to your experiences within your organizations, you know, especially on policy and practice. So I know, Deepa, कि आपके यहाँ अनुभूति में you have a strong anti-discrimination policy, and you have a strong anti-discrimination committee that ensures that these are met. And Vandita, we're aware that there are many ways in which you, as One Future Collective, explore policy and practice. So is there anything that Deepa, from an anti-discrimination point of view, आपके experiences के बारे में आप बात करना चाहते हैं? And Vandita, anything that you have tried, you know, collectively within your organization, which you have, you know, sort of enjoyed, learned from, it has been a good experience, and you're kind of proud of that journey. So anything you want to share there? Whoever wants to go first, please. Deepa, you want to go? ओके, नो प्रॉब्लम। वानी, जैसे तुमने कहा कि नॉलेज नॉलेज वैलिडेशन कौन तय करेगा, मैं तुम्हें अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि 22 साल करीबन मैं एनजीओ से के साथ जुड़ी हूँ, यहाँ पे नॉलेज बहुत ही ब्राह्मणिकल टर्म से आता है। इसके लिए मैं सॉरी भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे करियर एनजीओ के शुरुआत के 10 साल में, और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तभी भी, मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लो करवाया गया कि मुझे लिखना नहीं आता। मेरी लिखावट जो है वो सही नहीं। बस बात नॉलेज की नहीं है, वो कैसे प्रेजेंट रहा है, वो कैसे लिखा जा रहा है, कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, कौन लिख रहा है, ऐसे कई सारे आयाम जो है वहां पे जुड़ते हैं। लेकिन जब लिखने की शुरुआत की तब पता चला उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो इतने दिन जो मेरे साथ कम्युनिकेशन किया गया या मेरे साथ जो डील किया गया वो कितना झूठा था, राइट, कितना ज्यादा झूठ के ऊपर आधारित था। तो अगर अनुभूति की बात करें कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन में हमने पहली स्टेप कौन सी ली होगी,
तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी फॉर्म की। दूसरी बात वहां पे सोची कि अगर ये पॉलिसी है, ये बोर्ड है, एक तरह का सबसे बोर्ड को जितने इक्वल राइट है उतने एंटी डिस्क्रिमिनेशन कम्युनिटी को राइट है, तो इसके अंदर होंगे कौन? तो फिर से वहां पे है कि हमें इंटेलेक्चुअल लोग कुछ खास पहनावे के, खास लैंग्वेज के, खास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के, खास जगहों से आए हुए लगते हैं। एनजीओ ने मुझे एक गलत चीज सिखाई लगातार। उन्होंने मुझे सिखाया कि कई बार आदिवासी एंटी नॉलेज बैकवर्ड है, वो सुपरस्टिशियस है। हम वहां सुधारने जा रहे हैं, हम वहां पे बदलाव लाने जा रहे हैं, हम वहां पे शेप देने जा रहे हैं, आकार देने जा रहे हैं, कुछ नई नींव जो है वो डालने जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने अपने कम्युनिटी को फिर से एक रिविजिट करके नए लेंस से देखना शुरू किया, मेरा बचपन और एनजीओ का स्टार्टिंग, मैं अपने कम्युनिटी के बारे में काफी डिसऑनर फील करती थी। मुझे लगता था कि यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है, ये विकसित लोग नहीं है, डेवलप्ड लोग नहीं है। लेकिन जब बहुत बड़े पैमाने पे मेरे जैसे लोगों से बातचीत मेरी शुरू हुई, ऐसे दोस्त मिले जो आदिवासी है, एंटी है, काफी मार्जिनलाइज दलित है, डिस्प्लेस किए गए हुए लोग हैं, प्रकल्प में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले, ब्रिक पिकिंग में काम करने वाले लोग हैं, तब हम तब हमें बहुत ही जैसे एक तमाचा लगता है उस तरह से फील हुआ कि जिनको अपनी जिंदगी हर स्ट्रगल के साथ, हर कॉन्फ्लिक्ट के साथ, रिसोर्सलेसनेस के साथ जीने आती है, उससे बड़े इंटेलेक्चुअल कौन हो सकते हैं? जो डिजास्टर को डील करते हैं, जो किसी का भी विदाउट सपोर्ट और इग्नोर्ड निग्लेक्ट होते हुए भी जी रहे हैं, उनके एग्जिस्टेंस के सवाल होते हुए। तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन की अगर आप हमारी कमेटी देखेंगे तो उसके अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 90% एंटी आदिवासी है, जिनके बेगिंग के एक्सपीरियंसेस है, जो एंटी के ऐसे कम्युनिटी से आते हैं जैसे पोतराज कम्युनिटी चाबुक मार के लेती है। आपने रास्ते पे अगर देखा होगा कि हाथ में देवी देवताओं की मूर्ति लेकर जो बेगिंग एंड आर्ट परफॉर्मेंस बेस्ड कम्युनिटी है। तो हमें शुरुआत में काफी लोगों ने पूछा कि आपको कैसे लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर अपना थॉट बता पाएंगे? तो हमारा उसके लिए सवाल का जवाब ये था कि जो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, बाहर के दुनिया में रहने वाले, जो ऊपरी तह पे रहने वाले लोग हैं, हर जगह पे एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन फील करता है, उससे बेटर कौन डेफिनेशन दे सकता है एंटी डिस्क्रिमिनेशन का? राइट। तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन का एक राइटअप आप देखेंगे, उसके अंदर तो ठीक है, कई सारे भाषण लिखे होंगे जो आजकल पेपर में हम लिखते भी है। हमारे लिए मायने रखता है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे करेगा। कई बार एंटी डिस्क्रिमिनेशन में लेते समय लोगों को लगता है कि दीदी हम इस कमेटी पे कैसे आएंगे? वहां पे हमारा काम है कि कमेटी पे आना ये हमारा प्रिविलेज है। बोलते तो है लेकिन हमें इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ये कमेटी चेंज भी होती है। हमारे कमेटी पे देवदासी है, और मुझे काफी बताते हुए खुशी हो रही कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन से जो साथी ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो हमारी जो मुरली देवदासी कम्युनिटी में की औरत है वो इस साल अनुभूति के बोर्ड पे है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो कर सकते हैं, वो ही कर सकते हैं आई थिंक, जो इतने स्ट्रगल से आए हैं। और उसके अंदर जैसे मैंने पहले भी बोला था, लेकिन बहुत मायने रखता है आपका अप्रोच, आपका नजरिया, स्लाइटली आपकी नजरें, आपका बिहेवियर, आपके एटिगेट्स, आपका परफॉर्मेंस, लोगों को जोड़ लेने में उनकी एजेंसी है क्या, उनकी जगह है क्या? क्योंकि वानी को तो मैंने बोल दिया आ जाओ आपकी जगह है, लेकिन उनको 2 कदम लेने के लिए भी अगर हमने जगह रखी नहीं, वो तो ऐसे अकड़ के खड़े हैं, तो लोग नहीं फील करेंगे कि उनकी जगह है। तो शायद उनकी जगहों के लिए हमें थोड़ा बैकस्टेज होना पड़ेगा, और हमें वो चैलेंज स्वीकारना पड़ेगा कि कई सदियों से जिनको जगह लेने के लिए हमने सीमित माहौल दिए हैं, उनके लिए हमें 2 कदम आने में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा एक्सपीरियंस तो, मुझे लगता है एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमिटी एंड अप्रोच ये अनुभूति की सबसे बड़ी ताकत है। Thanks, Deepa. Sorry, Vani, go ahead. No, go ahead. I was going to hand over to you. No, thanks for sharing that, Deepa. I was really happy to read the policy you all have in the committee that you put together as well. I think One Future Collective के side पे there's been a bunch of things that we've been able to do, कुछ successfully, कुछ not so successfully. I think एक चीज है कि policy wise we're quite strong because आधी team lawyers की है. So I think सबसे और कुछ आता नहीं है तो हम at least वो चीज पहले कर देते हैं. But I think
what we have learned is कि policy needs to go with practice and with intent, right? I think हमारे में actually ज़्यादा problem internally team में ना होके externally हुई है. Like अगर discrimination है, sexual harassment है, we've never had internal complaints, internal grievances नहीं आए हैं. So policy है, complaints नहीं आ रहे हैं. अगर कुछ हुआ है तो resolve हुआ है. That's been fine, right? But I think the place where we have been very stuck is when harassment, discrimination has happened from an external partner. So I think what has been very useful there is अब हम हमारे सारे contracts में, चाहे वो grant agreement हो, funder के साथ हो, कुछ भी हो, we put in these clauses saying our policy will apply, because आप notice करोगे कोई भी funder हो, कोई भी powerful position वाले लोग हो, उनकी policy में, उनके contract में सिर्फ उनका policy apply करेगा, सिर्फ उनका process apply करेगा. And those are biased processes, right? Often they are, and often they're quite like one-sided. जैसे even the way they're held, कि committee पे कौन है, committee की meeting कहाँ हो रही है, मेरी team को comfortable भी लग रहा है उस कमरे के अंदर घुसना, right? So a lot of those things. So I think changing the contracting, it's a very tiny thing, एक छोटा clause है 5-6 line का. I think what that has helped is it's given us social protection in that engagement. We have protection in case something happens. I think वो contract में लिखते, the other thing that happens is कि जो हमारे partners हैं, they know we have serious intent. They know कि अगर इस पे कुछ हुआ, then we will take serious action, right? So I think from a discrimination point of view, that has really helped. The other thing that OFC, One Future Collective, has really tried to do, अब कितना कर पा रहे हैं या नहीं, I think team members बता पाएंगे. I think a recent report भी निकला था salary benchmarking पे. And the reason I talk about money so much is because it's necessary. COVID के पहले हम बात नहीं करते थे इतनी, and then COVID में a lot of us realize कि हमारे पास है नहीं. Like जो हमें, needs कम है ना, life में we've not spent a lot, so needs are less. So till a big emergency happens, चल रहा था. And then lots of big emergencies happen together for lots of team members. And we're not a traditional non-profit where we're like, ठीक है, तो तुम छुट्टी ले लो maximum. My team members' problem is my problem. So how do we fix that when none of us have the resources to fix that? And I think what we shifted from then, from the pandemic, is we pay higher than the sector benchmark. And to me, I would rather have like 15 लोगों का team चलेगा मुझे अगले 10 साल तक, but they have to be people that are well resourced. They have to be people, जैसे हम उनको health insurance provide करते हैं. अगले साल हम कोशिश कर रहे हैं कि health insurance individual से partners और family को भी extend हो पाए. We provide other employee benefits, paid leave एक होता है, but learning development benefits, because बहुत लोग जो हमारी टीम में आते हैं उनको या तो professional, अगर education हुआ भी है, like we don't have people always from like tier 1 type colleges, वो networks, वो access, वो नहीं होता है. So even things like business communication कैसे होता है, या basic चीजें, right? तो वो अगर उनको सीखने का मन है, not from our side, so we provide them a financial budget. I think the third thing that has really helped is we provide developmental coaching. जो दीपा बोल रही थी कि आपने जो पहले बोला था around CV, right? How do you value your experience as experience? And that is what we want to bring in through this coaching. So peer coaching hai, it is from people with similar lived experiences, right? Like, is it someone with a similar religious, caste, queerness, disability background? So that ek to they understand aapke saath kya ho raha hai. Because sometimes when you talk to people who've never experienced any of this, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आज न्यूज आपको इतना क्यों अफेक्ट कर रही है, आज अगर आपके घर में ये चीज वो आपको क्यों अफेक्ट कर रही है. सिंपल थिंग्स लाइक अगर घर में 3 दिन पानी नहीं आया, if a coach does not understand that, you're not going to be able to coach that person effectively. So being able to do that has really helped see a shift in people's confidence. Not just at OFC, right? वो लोग OFC छोड़ के और जगह भी काम कर रहे हैं. They've gotten scholarships to go abroad, all of that. The shift that has happened in them is that they know they have value. And not just value as a professional, but as a person. So I think these are three things. A very strong policy framework. हमारा एक internal manifesto है, काफी detailed policies हैं, reimbursement के, सब चीजों के, grievance redressal, harassment वगैरह, all of that as well. But even policies around like where will you stay, what sort of money can we cover if you're traveling, all of that. And I think it provides an ecosystem of support. And then having money for like a health insurance, L&D, and decent-ish salaries
has provided us some benefits here. Something that I have struggled with और मेरे पास आंसर नहीं है, तो अगर किसी के पास हो तो I'd love to hear more, Deepa or anyone else as well. I have had a lot of young people जो हमारे communities में हैं, जो हमारे fellows हैं सब. Sometimes they want to work with us, right? But I have told them कि आप हमारे साथ काम मत करो, आप international NGO में apply करो and I will help you because the payments are so much better. And same within India, right? Sometimes I'm like, are you sure आपको इस sector में काम करना है? Because अगर आपके पास generationally wealth नहीं है, and we were talking about this even today morning, कि अगर generationally wealth नहीं है, तो मैं आपको कैसे बोलूं to settle in for a job like this? Of course, it might be a lot more than you have earned in the past or your family has earned. But the potential for you to earn, अगर आज सोचो मैं 11th standard के बच्चे से बात कर रही हूँ, उनके पास potential और भी बहुत है ना, and that is something I feel very stuck in. उनको ये काम करना है and I really care about them finding their passion. But sometimes I have said, you know, maybe आप ये weekends को करो. And अगर आपके 2-3 interest है, अगर किसी का interest सिर्फ ये काम है, then I'm like, okay, just do this. But अगर आपके 2-3 interest है, then do you want to make your political interest your professional interest? Because I want to change the sector, but I don't know when it will change. And I personally feel guilty sometimes because पिछले साल तक I think मैंने एक महीना ऐसा नहीं हुआ है where I have not done 2 jobs with OFC. So alongside OFC मेरे 1 या 2 part-time jobs constantly थे alongside studying, simply for resources. So I think that's been the other side of it, right? So that's a challenge I don't have a response to, because एक तो discrimination होता है within the organization, and दूसरा discrimination होता है जैसे if a team member is facing violence at home, if they're facing abuse in another relationship, अगर community में, like I've had team members जिनको building में नहीं रहने दिया जा रहा, things like that. What is needed to escape that? And I don't have the answer for that. And when my team shows up to One Future Collective in their full self, हम बोलते कि आप अपना full self लेके आओ work में, कैसे लाए? And अगर full self लाए तो फिर काम कैसे करें? And then what is the balance there? And not to say कि आप मत लाओ full self, but हम कैसे और support provide करें? मेरे पास इसका answer नहीं है. We have policy, हमने contingency budget रखा internally. हमने pandemic में एक extra budget और resources से निकाल के इसमें allocate किया था कि कुछ emergency हो, अगर आप violence face कर रहे हो, XYZ, आप इसमें से funds ले सकते हो, no questions asked, things like that. But I don't have a long-term answer to that. So that's my challenge, that when your team represents the people you work with and for, how do you ensure their safety outside of your workplace? Because they can only be as safe at work as they are at home. And what is the boundary of your responsibility? And एक तो paper responsibility होती है ना, I understand मेरी कोई legal responsibility नहीं है. But this is not just my team, these are my friends, these are my community members. So then what do I do? So I think these are 2 open questions for me. Ki, should we even be pushing people? And I think the sector loses out when people like my team cannot be in the sector, because they bring a thinking process, they bring so much which we need to change how things happen. But how do we do that in a way that is just and fair to them? And how do we address violence, abuse, discrimination that they face outside to be able to come into work? I've had it happen in small interactions. ना, जैसे कोई मेरा टीम का कोई ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, वो ऐसे इश्यूज पे ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं जो उनके बारे में नहीं है. They are training about something that is about them. And I think Deepa was mentioning that as well. And फिर कई बार लोग जो चीजें बोलते हैं, and I understand कि वो हमारा रोल भी है कि हम वहाँ उसी वजह से ट्रेनिंग के लिए गए हैं. How do you balance that? I don't know. We have policy, we have mental health, we have health insurance. But एक point के बाद, what do we do? Okay, I will stop being so hopeless right now, and I will stop. But if Deepa, you have some thoughts, or anyone else, please. ट्रू. कई सारी चीजें तो सही है. मतलब हम कुछ ऐसी कश्ती में सारे लोग सवार है कि सबको तो पार करके जाना है अच्छी तरह से. लेकिन मैं, जैसे वानी फर्स्ट हमारा कॉल हुआ था, मैंने तब बात की थी कि वेरी इंपॉर्टेंट करेज, कि ऑर्गेनाइजेशन, मूवमेंट, फंडर, कंट्रीब्यूटर,
फिलोंथ्रोपिस्ट किस करेज और डेयर से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, राइट। वेलबींग की बात करना और वेलबींग के ऊपर इन्वेस्ट करना, राइट। मेंटल हेल्थ की बात करना और मेंटल हेल्थ के अंदर अफोर्डेबल एक तरह का एनवायरमेंट रखना। फिजिकल हेल्थ की भी बात करना। विदाउट रिसोर्सेस कोई भी बात जो है वो पॉसिबल नहीं है। अम, अनुभूति जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि हमारी 15-16 लोगों की टीम है और रेगुलर हम जिस कम्युनिटी के साथ काम करते हैं हमारे वही आइडेंटिटीज है। तो मेंटल हेल्थ की तो एक बात है ही, लेकिन डिजास्टर, कोरोना, हाँ, साइक्लोन, उसी की समय फ्लड आ रहा है, हम फ्लड इफेक्टेड एरिया में काम करते हैं। जो कम्युनिटी के लोग हैं वो खुद उनकी जो फैमिलीज है वो बेगिंग एक्सपीरियंस से आई है, कोई ऑर्फन है, कोई टीम मेंबर हमने अपॉइंट किए जब उनके साथ हम रिलीफ कर रहे थे, कोई टीम मेंबर अपॉइंट किए हैं उनके साथ हम केस हैंडलिंग कर रहे थे, वो हमारे क्लाइंट थे, राइट। तो ऐसे सरकमस्टेंस में जब लोग आते हैं तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि ऑलरेडी वो काफी ज्यादा स्ट्रगल और एक तरह का एक्सप्लोटेशन महसूस करके आ रहे हैं। वहां पे मैं काफी एक तरह से पॉजिटिव रहकर ही काम कर पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ना बोलूँ तो मैं वैसे भी डिटोरिएट हो जाऊंगी, ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना अपने आप में चैलेंज है, वो ताकत करना नामुमकिन जैसी ये बात है। उसके बाद आपको टीम एक तरह से हैंडल करनी है। तो हमने कुछ सालों में ये सीखा कि आपको न्यूट्रिशन से प्रोवाइड करना है। पहले डर लगा था फर्स्ट सेकंड गवर्नमेंट है क्या, दीपा, आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अच्छा, आई थिंक आई कांट सी दीपा। Deepa's frozen, I think. Maybe या wait या for a minute. वैसे भी टाइम हो गया है, हमको रैप अप करने का। व्हेन दीपा इज बैक, यस आई थिंक दीपा इज बैक। या या अभी आवाज आ रहा है? हाँ मैं जी। एक हम्म 1 मिनट में मेरी बात खत्म करती हूँ कि ओके, फिर से लॉगिन हो रहा है तो ये। कि मैं वीडियो बंद कर लेती हूँ एंड आई थिंक अगर हम कुछ लोग वीडियो ऑफ कर लें तो शायद बेटर हो। गो अहेड। आवाज आ पा रहा है ना? हाँ, अब एकदम क्लियर आ रहा है। हाँ, बस कि 2-3 बातें मुझे लगती है कि कई बार जब फंडर सर्कल में या कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों के सर्कल में जिस वेलबींग की बात की जाती है, कई बार हम तो उस तक पहुंचे भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम तो अभी तक हमारे फंडामेंटल चीजें छुड़ा रहे हैं कि हमारे टीम को न्यूट्रिशन अलोकेट कैसे करें, बारिश के अंदर जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है वो कैसे अलोकेट करें। इन हाउस काउंसलिंग तो हम करते हैं, लेकिन बाहर की काउंसलिंग के चार्जेस भी बहुत ज्यादा है, वो इन प्रोजेक्ट हम किस तरह से कर पाए। कपड़े से लेकर हर चीज हम किस तरह से रिसोर्स वहां पे बिल्ड कर पाए, उनकी पढ़ाइयों के लिए जगह कैसे कर पाए। तो यहाँ पे तो बेसिक नीड के ही काफी क्राइसिस है जहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं। दूसरा, एक बोलते हुए मुझे ध्यान में आया कि उसके ऊपर प्लीज एनजीओ ने थोड़ा सा काम करना चाहिए कि आप मेन स्ट्रीमिंग और एस्टेब्लिश रिसोर्स पर्सन के लिए क्या सोचते हो वो आप तय करो। लेकिन जो रिसोर्स पर्सन ग्रास रूट से आ रहे हैं, जो एनटी है, दलित है, आदिवासी है, पूरी तरह से मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आ रहे हैं और उसके बाद वो एज ट्रेनर काम कर रहे हैं, एज राइटर काम कर रहे हैं, वो पैनल पे आ रहे हैं, वो कई जगह जाके प्रेजेंट कर पा रहे हैं। हमें हमेशा झगड़ा करना पड़ता है कि आपने इसके लिए बजट क्या रखा है। लोगों को एज्यूम होता है कि अच्छा इसके लिए बजट। मैं रेगुलरली आउट ऑफ स्टेट भी ट्रेनिंग करती हूँ। ये इतने चीप चीजों के लिए जो निगोशिएट करना पड़ता है वो एक तरह का मतलब बहुत ही एक डिटोरिएट कंडीशन है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो ग्रास रूट के लोग आ रहे हैं, आप उनका इंटेलेक्चुअल बेनिफिट भी नहीं दे सकते हो, राइट। उनका रिसोर्स ऑनरेरियम, उनके ट्रैवल अकोमोडेशन, उनकी रहने की जगह है। कुछ हद तक कोई लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कई जगह पे निगोशिएट भी करना लगता है। तो ये जो झोला उठाओ एटीट्यूड हमें सिखाया है कि सब रिसोर्सलेस होकर काम करना है, निहत्ते काम करना है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये निहत्ते होने में कुछ लोगों की जिंदगी कम होने वाली है, कुछ लोगों का औसत एज कम होने वाला है। तो किन लोगों का होने वाला है वो हमें सोच लेना पड़ेगा।
तो इक्वल बेनिफिट देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आगे जाके मैक्सिमम बेनिफिट देना चाहिए जो इस तरह के स्पेसेस में अपनी जगह क्लेम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत चुनौतियां है ये। आई थिंक अगर मैं एक लाइन में, नहीं एक नहीं, दो लाइन में सम अप करूं और इसके बाद में मेरे कॉलेज शिखा को हैंड ओवर करूंगी, कि एक है कि दीपा, जैसे पहले आपने कहा था, रिविजिटिंग एंड रीफ्रेमिंग ऑफ एनजीओस is required. There are so many fundamental questions that Deepa and Vandita have both raised. And another thing I'm thinking of is aspects like stress and boundaries, and how we are not just stress doesn't come from just one source. How, what are the multiple sources from which stress comes, and how are we as an organization placed to even respond and continue and address them. So okay, we have around I mean, don't want to rush Shikha, but Shikha is going to attempt to give us a quick summary of what's come up today, and then we just have a 2-minute thing that we hope you all are able to wait for. Over to you, Shikha. थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? दीपा और वंदिता, आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। अभी ये जो मुझे ये काम सौंपा गया है कि अभी समराइज करो की पॉइंट्स, ये समराइज के चक्कर में मेरा दिल धड़क रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में इतने इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस हुए हैं कि इनको कैसे समराइज करूं पता नहीं चल रहा है। दो चीजें हो सकती हैं, तो मैं आपको दोनों चीजें बोल रही हूँ, फिर जो मैंने ऑप्शन सोचा है। एक की जो मेरे दिमाग में लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हो वो मैं यहाँ पे बोलूं, लेकिन उससे बहुत कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि सब लोगों के लिए इंडिविजुअली कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत हाइट पे, मतलब बिल्कुल इन फ्रंट, उनके लिए की पॉइंट्स रह जाते हैं, बाकी कुछ साइड हो जाते हैं। तो मेरा दूसरा मेथड है, पुराना ओल्ड फैशन्ड मेथड है। मैंने खाते पे कुछ कुछ चीजें लिखे हैं, और वो सीक्वेंस में जो जो चीजें की पॉइंट्स आई हैं वो मैं सीधी तरह सिर्फ लिस्ट की तौर में मैं यहाँ पे बोलूंगी, ताकि फिर आप वो कनेक्शंस क्विकली अपने ही लिए आप जोड़ सकते हैं। तो अगर मैंने कुछ गलत या कुछ कहा, आप प्लीज इंटरप्ट करके उसको ठीक कर देना उसी समय। थैंक यू। तो मैं एक्चुअली मैं शुरू में एक पोल क्वेश्चन था, और मैंने देखा कि कुछ रिस्पॉन्सेज उस क्वेश्चन में ऐसे थे जो एक्चुअली आपके कॉन्वर्सेशन में बहुत रिफ्लेक्ट हुई हैं। तो वो कुछ रिस्पॉन्सेज ये थी, कुछ लोगों ने कहा कि आप, क्वेश्चन था, व्हाट प्रैक्टिसेस मेक यू फील सेफ, इंक्लूडेड एंड अफर्म्ड एट योर वर्क प्लेस? कैसी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं? और लोगों ने कुछ कुछ ये बोला, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विजिबिलिटी, रिस्पेक्ट, एक्सेस टू कमिटीज, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ओपन कम्युनिकेशन। अब बहुत और भी कुछ चीजें भी बोले गए थे, जैसे पॉलिसीज वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो कुछ शब्द हैं ये मैंने सर्कल भी किए हैं, मेरे दिमाग में भी रहे, क्योंकि ये आपके कॉन्वर्सेशन में नॉलेज शेयरिंग, इंटेलेक्चुअल, हम जो अजम्पशंस बनाते हैं किसी और के बारे में, ये सब चीजें से जुड़ती हैं। ऑनेस्टी, ओपननेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके आगे जब आपका कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ था, वंदिता ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला जो यहाँ पे अभी भी है, रिफ्लेक्शंस। हाँ, एनजीओ सेक्टर में हम सब करते हैं, लेकिन एक्शन पॉइंट्स, तो ये हुआ पॉइंट 1। वो एक्शन पॉइंट्स, थिंकिंग यस, लेकिन डूइंग, इसका इंपॉर्टेंस। फिर इसके आगे आया थिंकिंग से दीपा ने जोड़ा कि थिंकिंग बहुत अलग अलग डाइवर्स सोर्सेस से आती हैं। तो जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमें वो थॉट्स, इंपॉर्टेंट चीज है डाइवर्सिटी, ओके, वो थॉट्स क्या क्या है डाइवर्स सोर्सेस से, उनको शेयर करना, उनको आगे बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एनजीओज एक अहम, एक ऐसे पोजीशन में है कि ये अलग अलग थॉट्स बाहर निकाल के फ्रंट करना, वो मतलब
उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है टू एक्चुअली डू दैट। इसके आगे आया, थॉट्स के आगे आया विजन एंड लीडरशिप। कोई एनजीओ जब एनजीओ बना कुछ कारण के लिए बना, और लीडरशिप हर एनजीओ का जो होता है, लीडरशिप शेयरिंग कैसा है वो लीडरशिप, हेल्थी, इजी और बर्डन ऑफ लीडरशिप, ये कुछ इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है सोचने बारे में। तो लीडरशिप, नॉलेज शेयरिंग, थॉट्स। नॉलेज शेयरिंग में आया एक क्वेश्चन जो वानी ने पूछा था, द इम्पोर्टेंस, जो बोला था इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड डेमोक्रेटाइजिंग। तो इसमें फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, ये क्यों होता है कि कभी कभी शेयरिंग या डेमोक्रेटाइजेशन क्यों नहीं होता है। एनजीओज का एक कल्चर है, और एनजीओज में एक चीज जो होता है, दे लुक फॉर सक्सेस। ये पॉइंट रेज हुआ था that the fear of failure, हम सबके पीछे, मतलब इट डॉग्स अस, इट हमारे सामने आता है फियर ऑफ फेलियर, और हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को थोड़ा भूल जाते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम फेलियर इज अ की पॉइंट। फेलियर इज एन इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज वी कैन लर्न फ्रॉम इट। फिर आया इसके आगे अगला पॉइंट, एक चीज जैसे ये भी कॉन्वर्सेशंस में आया है, हमारे रिपोर्ट में भी आया है, किसी भी आइडेंटिटी जस्ट बिकॉज हम उसको एक लेबल कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सेम है उस आइडेंटिटी में। उस आइडेंटिटी में भी न्यूआंसेस है, फर्क है, हायरार्कीज भी है। तो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑलवेज टू थिंक अबाउट। इसके आगे द इम्पोर्टेंस ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम सीवी देखते हैं या सीवी बनाते हैं तो हम किस चीज पे फोकस डालते हैं, स्किल्स, क्वालिफिकेशंस वगैरह वगैरह। लेकिन लिव्ड एक्सपीरियंस जो एक इतना इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, एक सिस्टम होना चाहिए हमारा देखने का, एक सीवी पढ़ने का या लिखने का एक नजरिया, एक कॉन्सेप्ट, वो ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि लिव्ड एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंदिता, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला कि हम देखते हैं इसी कल्चर में, क्योंकि फंड्स और रिसोर्सेज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा हमारे सामने आता है। तो हम देखते हैं फिट ऑफ अ पर्सन, लेकिन ये फिट ऑफ अ पर्सन एंड लिव्ड एक्सपीरियंस एंड आगे जो आपने बोला बाउंड्रीज के बारे में, ये चीजें कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पॉइंट आउट किया कि एक चीज है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आपने एक एग्जांपल दिया जब आप यंग पीपल को बोलते हैं कि एक स्ट्रेटजी मीटिंग पे आप आओ, और वहां पे आपने देखा है, यू हैव सीन दैट देयर इज सम फियर ऑफ बीइंग, से फॉर एग्जांपल इन अ स्ट्रेटजी मीटिंग, व्हाई डज दिस हैपन? तो वी हैव टू क्वेश्चन आवर कॉन्फिडेंस एंड why we are confident or not confident about something, to create space for that as well in the organization. Non-profits do not equal movements. वंदिता, ये आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, to bring the movement mentality to the NGO sector. Again, we link this to lived experience, लेकिन इसके साथ वो बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क टू थिंक अबाउट बाउंड्रीज अगेन। जैसे आपने एग्जांपल दिया था दैट are we sometimes forced to share our personal stories no matter what the impact is on ourselves, because in our work वो personal story share करके ही हम किसी को कुछ अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं या उनसे कुछ रिसोर्सेज या ऐसे चीजों के लिए so we have to share our personal stories. तो इसके repercussions क्या हो सकते हैं? This too we have to think about boundaries. आगे बढ़ के this very important thing, दीपा, आपने इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन और जो हम assumptions बनाते हैं about people and intellectual abilities and intellectual expression, तो इसको क्वेश्चन करना is perhaps one of the
key, most important things that we can take home with us to not limit expression. और फिर हम स्पेस कैसे बनाए कि हमने बोला फॉर एग्जाम्पल कोई representation है, लेकिन स्पेस बनाया है क्या फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ दैट representation. आपने ये भी बोला है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल चीज है, हम बोलते हैं कल्चर शॉक, लेकिन एक्चुअली इतना सिंपल चीज नहीं है. दिस इज टाइड अप, connected to all these points. So what kind of support do you need? What kind of support do I need, or does any person need, to bridge these gaps when you come from such diverse backgrounds and are in the same space? So I think this is connected to issues of equity. I'm moving on. ये to respect the intellectual strength of a community also needs everyone to raise their own level and their own skill to listen and to understand those diversities that are sharing their thoughts and their experiences with us. So as a listener, and to understand also, we have to raise our own level skill to understand. फिर just one or two more points on intellectual strength. There is this issue of appropriation of intellectual property, which is a very key issue. So when we are dealing with different experiences, this is something we have to keep in mind. I'm moving on to the conversation about policy and practice. This is यहाँ पे एक चीज जो शुरू में आया, ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. यहाँ पे आपने बोला था दीपा अबाउट ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज. आई वाज टोल्ड आई कुड नॉट राइट, फॉर एग्जांपल. ये एक एक्सपीरियंस आपने शेयर किया. तो एक तरीके से क्या ये सेल्फ स्टिग्मा है जो सोसाइटी और लोग ऐसे कंस्ट्रक्ट, एक फ्रेमवर्क में एक सेल्फ स्टिग्मा ही आ जाता है. तो टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड लुक एट दिस एज वेल, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. Those who have experienced the most discrimination are the ones who can define anti-discrimination. This is very true, very important. We need to make space and create space for this to happen for those who have not had the space. So again, the question of what is the responsibility, what is any person's responsibility, yours, mine, ours, to create these spaces through these conversations. Then we move on to policy needs practice and intent. What is the practice and the intent to support any policy? I'm sorry, मैं थोड़ा जल्दी, I'm moving forward fast क्योंकि एक आंख टाइम पे भी है. तो एक very important example वंदिता ने दिया about changing the contracting. जो हम contracts with outside parties करते हैं, we put our policies, we foreground our policies so that external or third parties know that we are serious about the things we are saying and the way we wish to function. Finally, not finally, but I'm reaching a close. Money and resources. It is critical that we all think about our approach to money and resources, and that we bring this approach forward, particularly to funders, philanthropists, to the people that we work with. There are struggles with money and the importance of resources, and this is still an open question. There are no answers to this. As Vandita said, it's not something that we have easy answers for, but we need to foreground this. And a last
a last few points here that we have. How do we ensure the safety of our teams outside of our own organizations? हमारी अपनी बाउंड्रीज क्या है, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्योंकि पॉलिसी के साथ चीजें खत्म नहीं होती है। हमारे टीम मेंबर्स, हमारे कॉलीग्स जब ऑफिस के बाहर या वर्क स्पेस के बाहर जाते हैं, वो भी कुछ फेस करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में। व्हाट कैन वी डू, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद दिस? दीपा, आपने एंड किया ये बोल के, द इम्पोर्टेंस ऑफ करेज फॉर एवरीवन। दिस इज अ वंडरफुल टेक होम वर्ड, जस्ट द वर्ड करेज। ये हर चीज में आ जाता है, एवरीथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड फाइनली, अगेन, द मैटर ऑफ हाउ डू वी एलोकेट रिसोर्सेज. It is critical to think of how we think through and strategize about resources. How do we allocate resources for people? अभी यहाँ पे मेरा खाता अभी एंड हुआ है, my list has ended, and I know that I have not covered many things, but I hope I have been able to take you through the steps जो इस conversation में थी, and I will quickly hand it back to Vani, Vandita and Deepa for anything in closing that I have missed out. Thank you. We are a bit late on time, so I will hand over to Chitrangi, who has a little bit of wrap up for us to do. Thank you so much, Shikha. Thank you, Vandita and Deepa, for being here, and Shikha for the wrap up. I think a lot of important topics and themes and threads have started to emerge from the conversations, and our tech team has shared the link for our reports, so you can go through the report. We also have a short infographic version of it, and there is a full longer version of the report as well. A lot of important reflections and policies and practices from organizations and gaps that have been identified. So please do read the report. And our tech team has also shared a second poll question. We request you to open the link and share your opinions and thoughts on this, because this is hopefully the first of the conversations that we're having on this topic as a sector, a very important topic that we have started to address. So we hope to hear from you about the kind of support, the kind of topics that the themes and conversations that need to be taken forward, and how TARSHI can help take this conversation forward. So we hope to hear from you. And we also want to thank all our interviewees and our survey respondents and participants for giving us their time, for chatting with us and sharing their practices, policies, beliefs and thought processes, and about the organizational cultures. And also thank you everyone for attending this webinar. And we know we overshot a little bit on time, and thank you for staying until the end. We will be sharing a follow-up email which will contain the key points that were discussed during the webinar, and also with a list of resources. And please feel free to write to us if you have any questions, or if you want to follow up on any of these conversations and topics, because we do hope to create more spaces to have these conversations. We hope to facilitate these conversations again. This is just the starting point. So thank you, everyone. And to close with a big thank you to Deepa and Vandita once again, and to all TARSHI members who've supported us in various ways at the webinar. Thank you again for attending, and have a great evening. Thank you. Thank you. Thank you for having us. Thank you. We can thank our ISL interpreters.
Hi, should I end the call, Vani? Vani is here. Yes. I'm ending the call, okay? Manisha, thank you so much. We will be in touch.